Oh yes, recording is. ओके, तो ये एसी वोल्टेज कंट्रोलर यहाँ पॉजिटिव स्पीड दे रहा है मोटर की, ठीक है। और ये टॉर्क वेव फॉर्म यहाँ पे यू कैन सी द सेकंड वेव फॉर्म इज टॉर्क वेव फॉर्म एंड एट द 40 voltage of RMS voltage of 40, the speed is increasing with time here, and also the here you can see the uh, RMS voltage output. सिमुलेशन थोड़ा टाइम ले रहा है। You can see here the waveform. This is firing angle range up to which it may be the continuous, and after a certain value of inductance in the system and RL value is there, so there will be a certain conduction angle which is greater than pi. So when the system goes out of the conduction angle, the angle firing angle is greater than the extinction angle. So in that case the current will be discontinuous. Here for one cycle it is not acting, the fuzzy controller is not acting. Here from the completion of the second cycle, first cycle, the the reference voltage of 40 actually tracked by the actual output. Here we are giving the reference voltage by the shown by the pink color waveform. Here this is the reference and this is the actual value, actual RMS value, which is tracked by the fuzzy controller. So you can see here that we have designed the fuzzy controller which can be implemented for the motor also. So as you change the reference voltages here, as you change the voltage here, suppose you want to do here 60 volt, then firing angle is reduced, and in that condition maybe the system goes into the continuous mode. Okay, because there is a um, so I am stopping here now this simulation, and we can see how the reference input, suppose we have given the 16 voltage of 60 in as a input RMS value. So actually the controller is tracking and the actual value which is reached by the controller output is also uh, very near to the 60 volt RMS. So here this fuzzy controller can appropriately perform for the single phase induction motor also. Here you can see the, because for a certain time limit it will remain in the transient portion, and for after some time it will go to the steady state. So here up to some of the cycles it is in steady state. Okay, so you as soon as you run the simulation for a sufficient time, you will get the steady state speed of this AC voltage controller based single phase AC motor operation.
So you can here see that the objective of implementation of fuzzy system with AC drive, single phase AC voltage controller, as well as the implementation of this fuzzy controller for control of AC drive using single phase AC voltage controller has been completed, and the designing of controllers using simulation software fuzzy logic toolbox, this has already been discussed in the previous lectures. Now the remaining topic is the modeling of DC machine using simulation software and simulating toolbox. तो simulation software a MATLAB है, okay, and Simulink is a toolbox in the MATLAB, okay. So MATLAB have different systems. You have coding, you have this is a platform. There is a mathematical platform, bioinformatics, and control system, mechanical system. So Simulink have the different blocks for performing different functions in different fields. So Simulink toolbox provides us with large number of blocks. Okay, so for modeling the DC machines, we can use Simulink blocks and then check the performance, how it is actually acting. So before going into the simulation software about the DC machine, first we see here how the DC machine is performing. Here suppose we have given a voltage to the DC machine, so there will be equal to E plus R I A plus for this is for motor case, okay, this is for motor case, and V equal to E plus R I. It can also be called a V and VTC can be said, and V equal to E plus IARA plus LAPIA upon DT. Okay, so from here you can determine the DI. You can take the Laplace of this function. So it can be Vs minus Es, okay, by Rs, sorry, by LAS plus RA equal to the Laplace transform of the current. So what is the current in time domain? V minus E. Okay, E is the variable with the time, and V minus E upon RA equal to 1 upon S plus RA upon LA. So you see that the current varies V minus E upon RA, E minus RA upon LA. Clear? So I can be obtained by this time domain. So this the time domain performance of this time domain current in the DC machine can be obtained by this equation in the armature current. This is the armature current. In case of motor is standstill, the E is equal to 0, and in that condition the current will be maximum P by RA. Because the resistance is very low, so starting current is high,
and time is very small, so it can be small value. So 1 upon e raised power small value can be very higher value. Okay, so here RA upon LA. For transient time we are discussing. For transient time, this T is very small also, and back EMF is also 0. So in that condition, the current will rise to very high value. Now you have this transfer function I A S by V A S minus E A S. ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 1 upon L A R A. Clear? Students, can you listen the voice? Hello students. Yes, sir, सुनाई दे रहा है. Screen is visible? Yes, sir. So after this, now you have the two types of configuration, either series motor or shunt motor. In case of shunt motor, you have phi equal to constant. Okay, so you can assume phi equal to constant. Okay, so only the torque will depend on the armature current. Okay, not on the field flux, current, because field current is constant or flux is constant. So only the variation of the armature current will determine the electromagnetic instantaneous value of electromagnetic torque. So T equal to KT I IA. ओके, अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की इन द टाइम डोमेन, तो ये होगा. एंड इन इफ यू assume this term as TE equal to KT I A, because I is constant, so it can be assumed as KT. So in that case, TE S equal to KT I S. Okay, so our machine starts from here. We have given the Vs and plus minus here. So after this, you have a transfer function of LAS plus RA. क्लियर? तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन जब एड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा हमारा? आई ए एस. अब इस पे आप KT का मल्टीप्लाई कीजिए, देन यू मल्टीप्लाई बाय दिस KT. ओके, तो ये हो गया आपका TE S. ओके, अब ये TES यहाँ पे आ गया, समझ लो. नाउ इन दिस TES प्लस
and this is minus. Now you have TL. तो यहाँ पे जो फार्मूला हमारा नेक्स्ट फार्मूला बनता है वो क्या बनता है कि ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज लॉस्ट इन लो टॉर्क एज वेल एज इनर्शिया एंड फ्रिक्शन एंड विस्कस फ्रिक्शन. ओके, तो स्प्रिंग फोर्स और इसमें तो जे डी ओमेगा अपान टी टी. ओके, प्लस बी omega. Suppose that this is the spring viscous friction is very small. Suppose that, so that part is means here it is assumed that the viscous friction is there, but so here only two parts will be there. Clear? So Js plus B omega. So in that case, the omega S equal to TE S upon JS प्लस. ओके, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा तो हमारा क्या निकलेगा, सॉरी दिस इज प्लस टी एल. तो यहाँ पे आएगा टी एल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे जो वैल्यू आई टी ई माइनस टी एल, ठीक, इस पे हम एक ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे हमने लगा दिया 1 अपान JS plus B. Clear? So you have ultimately got the omega S, the angular speed of the motor. Clear? Now you integrate it. You integrate this, you will get 1 upon S integrator, and you will get the position, angular position of the motor. Now here ES is necessary. ES is needed, the back EMF. So back EMF is depending on this speed KB. Okay, KB into omega S. Clear? So this is a total closed loop model of the motor, and the output theta S by input voltage Vs can be given by the overall transfer function of this complete system. Clear? So now you have to make this complete system a model of DC motor in Simulink. Simulink में बनाने के लिए क्या करेंगे आप? You need the इंटीग्रेटर्स. कंट्रोल सिस्टम में हम जनरली इंटीग्रेटर्स ही यूज करते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेटर्स को हम लेफ्ट राइट में इंटीग्रेटर्स लेते जाते हैं, और जो मोस्ट डिफरेंशिएटेड वैल्यू है वो लेफ्ट में रहती है, ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, कैन यू लिसन? वॉइस इज ऑडिबल? Yes, Suppose purely audible. Suppose you have VDC input, okay, and VDC is changeable all the time. If VDC is unit step, and in that case the Vs will be 1 upon S. If
VDC is impulse, then Vs will be 1. Okay, so different time domain values may vary here. So we are giving simply input, and then a subtractor will be there. Okay, so here this is the subtractor, and here you have EA, and EA has the gain of EB. Here you have the gain. Okay, so you take the gain here. You suppose you have KB, to suppose is put here KB only. Okay, later we will define in the command window the values of KB. Okay, so we here now here you स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं सर, वापस शेयर करनी पड़ेगी अब। आ गई सर, मैंने फिर शेयर की है। आ तो गई यहाँ पे आपने भी yes you have given here VDC. Later we will define the value of VDC, and this is negative feedback EV V minus E. So here you plus and we take plus and minus, and here you define the LA and RA. Okay, now here you define by the gain K. Here you have gain KT. This we are doing for shunt motor. Okay, shunt excited motor. Shunt excited motor may be self excited or separately excited. Okay, so here you have got the current here. Here you have got the IA, and here you have got the TE. Okay, now in the TE you take again a subtract here. तो यहाँ पे ये आपने एक सबट्रैक्टर और ले लीजिए, एंड simply have a fixed input value of TL. Suppose you are giving a TL value. Okay. तो यहाँ पे ये आपने दे दिया. After this you give the यहाँ पे आपने यहाँ पे JS दे दिया, J दे दिया और B दे दिया.
यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकला वो ओमेगा निकल गया, एंड ओमेगा के बाद आपका यहाँ स्पीड बैक आ गया, तो ये वाला निकला टी माइनस टी एल, और यहाँ से आपका निकला ओमेगा, और यहाँ से निकला थीटा। ठीक है, you have suppose you want to see the current, torque, speed and position, so you have to show the four values. So you see that theta, angular speed, and torque, electromagnetic torque here, and now you have the current. Okay, now here in the command window you can define, suppose we want to define the AB equal to कितना बैकएम कितना बनना चाहिए, 50 वोल्ट आउट ऑफ 5000 आरपीएम सपोज. ओके, सो 50 ये वोल्ट सेकंड में होना चाहिए, वोल्ट सेकंड पर रेडियन. ओके, ये कितना होना चाहिए इसका कैलकुलेट करो कि अगर 50 वोल्ट इन 5000 आरपीएम अगर है तो केबी कितना होगा. देखिए मैं 5000 आरपीएम में चलेगी तो 50 वोल्ट आउटपुट देगा वो. ओके, तो ये कितना इसका वैल्यू होगा. तो आरपीएम को आप रेडियन पर सेकंड में वो कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए 2π/60, और यहाँ वोल्ट सेकंड पर रेडियन हो जाएगा, तो इंटू कर लीजिए इसको 2 इंटू पाई. ओके, इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू 60. तो 50,000 को 2π/60 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 15 × 60/5000 ये इतना वैल्यू आ जाएगा उसमें. ठीक है, तो कैलकुलेट करके बताइए. आई थिंक यू हैव द कैलकुलेटर. So 0.114. Okay, so the value of kb is 0.114 वोल्ट सेकंड पर रेडियन. मतलब रेडियन बहुत छोटा होता है, तो एक रेडियन घूमने पर वो 0.114 ही जनरेट करेगा. ठीक है, तो ऐसे हम ये क्या करेंगे, 5 का 3000 बटे 5000 ये आएगा, और बटे 6 करीब. ठीक है ना, और मतलब 6 दूनी 12, 1/12 के करीब 11-12 के करीब आएगा, तो 1/10 के लगभग है ये 0.114. ठीक है, तो ये हमारा केबी हो गया. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सपोज कि हम डायरेक्टली रख सर देते हैं 0.095 आ रहा है. 0.095 तो जो आप लिखे हैं ना इसके हिसाब से 0.09. हाँ, 50 वोल्ट जो है 50 वोल्ट पर 5000 आरपीएम, तो वोल्ट सेकेंड पर रेडियन में आएगा. ठीक है, सपोज कि 5000 आरपीएम पे चल रही है, तो 5000 आरपीएम पे ये 50 वोल्ट दे देगा उधर. ठीक है, 5000 आरपीएम में आउटपुट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज कि जो रेडियन पर सेकेंड है वो हमारा 0.95 ये है रेडियन पर सेकेंड. यहाँ से लिया रेडियन पर सेकेंड, और 0.095 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो यहाँ पे वोल्ट्स आ गया. क्लियर, यहाँ पे व्हाट यू हैव टेकन द रेडियन पर सेकेंड एंड 0.095 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यू विल गेट द वोल्ट्स बैक में आप. ठीक है, और यहाँ पे हम जो ये गेन लगाएंगे एक
we have to see the speed in RPM. तो यहाँ से हम करेंगे 60/2 × 5। तो ये हमारा हो गया। हम इसकी वैल्यू इतना सिलेक्ट करेंगे, तो हम कमांड विंडो में ये वैल्यू डाल देते हैं। ये V is equal to 100 वोल्ट, ठीक है, और KB इक्वल टू 0.095, ठीक है। आप अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि you have the output value of RPM here, then you give the directly 50 volt by 5000, okay। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से you take the signal from here and give 50 by 5000 here, तो वो वही आएगा लगभग, ओके। तो ये दो वैल्यूज हमने दे दी। तीसरी वैल्यू क्या है, KT, ठीक है। तो एम्पियर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, और ये KB लगभग एक ही होता है, ठीक है, क्लियर रहे। वोल्ट सेकेंड पर रेडियन, और ये न्यूटन मीटर पर एम्पियर KT एक ही होता है। पाई सपोज कि P/A, तो वो मिला के उसको कंप्लीट KT जो है वो आप ले लीजिए एक, अगर यू सपोज KT इक्वल टू 1, KT इक्वल टू 1 ले लीजिए। अगर ये एक स्मॉल वैल्यू KT इंटू 5, ठीक है, ये पूरा अगर 1 हम सपोज ले लेते हैं, और यहाँ पे L और R की वैल्यू सेलेक्ट कर लो, दैट LA इक्वल टू 2E-3 2 मिली हेनरी है, ठीक है। RA इक्वल टू 2.5 ओम है, ठीक है। J इक्वल टू इनर्सिया M इंटू R होता है, रेडियस। तो अगर रोटर का 1 kg का मान लो और रेडियस जो है तो इन मीटर्स अगर 1/10 मान लो, तो mr² इनर्सिया लगभग कितना होगा, 1 इंटू 1/100, ठीक है। तो 0.01 मान लो, ओके। और P को मान लो कि ये भी 1 है, क्लियर। तो इतना वैल्यूज हमने दे दी, और कोई वैल्यू बचा है TL। तो TL सपोज हमने दे दिया 1 न्यूटन मीटर, नहीं बचा इसमें। इसको रन कीजिए, ये रन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यूज दी, और ये हमारा, तो ये मोटर का RPM जा रहा है 10,000, लेकिन 100 वैल्यू। अब यहाँ पे हम VDC, अगर VDC भी चेंज 20 वोल्ट, तो क्या परफॉर्मेंस में चेंज आती है। तो यू कैन सी हियर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 2000 इतने स्पीड में इसको सिमुलेशन टाइम स्टेडी स्टेट के लिए लेना पड़ेगा कि ये मोटर है थोड़ा सा इनर्शिया ज़्यादा है, तो टाइम ज़्यादा ले सकता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल यहाँ पे ऐसे मॉडलिंग ऑफ, ये इसमें जे इनर्शिया वगैरह का कुछ वो होगा, इसको अगर हम इनर्शिया थोड़ा सा ज़्यादा ले लें तब शायद स्टेडी स्टेट पे जाएगा। तो 1 ये आता है ये, लगभग ये स्टेडी स्टेट में जाएगा एट द एंड। तो इसको आप
ओवरऑल डीसी मशीन का यही सिमुलेशन मॉडल है। ओके, तो ऐसे हम ये डेवलप करेंगे। आफ्टर दिस, when you want to change the by command and a PID controller here and a tuned PID, so you can find the closed loop transfer function of this. Okay, you find the closed loop transfer function of whole this controller, and this is the plant. Okay, and uh, this is the controller. PI controller will change the output input voltage to the motor, and you have the command. Actually, command will be depending on the reference speed and actual speed. So we can make a closed loop here. So यहाँ पे हम जब इसका क्लोज लूप बनाए, सपोज कि यू हैव गिवन अ कमांड वैल्यू ऑफ 2000 RPM, and you have given the actual speed here, feedback, and the PI. PID ट्यूनिंग भी हम यहीं से कर सकते हैं। अभी देखना पड़ेगा कैसे PID ट्यूनिंग हो। ओके, तो अभी तो जो भी वैल्यूज हैं उसकी अकॉर्डिंगली उसके ये वैल्यू जा रहे हैं। के बाद जो है तो यहाँ पे ट्यून का ऑप्शन आता है। ट्यून क्या ऑप्शन में क्या होता है देखना पड़ेगा। When you tune the value, so after tuning the value, you can get the PID values KP, KI, and KD, and input-output relationship can be shown here. So here there is the response for a unit step of the system, and when you change the values here, and this performance can be changed. Okay, so depending on these values, you can change the performance here. So tuned response is in blue color. Okay, so you have to get the for so now suppose this was 0.78. Okay, so reset design update block. Update, we have updated the block. Okay, so after updating the block, we have this just a minute.
Hello. Yes, Hello. sir. Yes, sir. एक मिनट रुको. अभी स्क्रीन दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. दिखने लगी. तो यहाँ पे ये जो ट्यूनिंग करने के बाद आफ्टर ट्यूनिंग this complete model and this DC motor model, we have given the input command reference speed and actual speed error as given in the PID controller, and PID has tuned, and this tuned parameter KP, KI and KD has now updated in this block. You can see here after tuning the same values have been updated here. Okay, 15 this 77 one same values are updated. So after this you can see here that the controller is performing here. So this is complete DC motor model, and you also have used the PID tuning together with the DC motor model. Okay, तो यहाँ पे जो speed है, you can see the speed here. This is the angle of theta here. First value is the angle theta, and it will always vary infinitely. Okay, the angle will always be increasing up to the infinite. Okay, and you can see zero value. So you can see here that you have the steady state speed, output speed of 2000. Okay, once please run again. You will see the so the motor has got its steady state at this time, and the angular position is changing with time, and initially the uh, torque is high up to approximately 80 Newton meter, and then it is reducing. Okay, because the kt equal to 1, so the torque is equal to the torque and current are nearly same values. So here you have seen that. Okay, and this is the सर फिर आवाज चलेगी. hello. So students, I think you have got good information from this lecture. You have. सर आवाज नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? Ask me to add this in this lecture, or any missing information, any feedback about this lecture.
शिवम भाई यस शिवम भाई डैश पर आए। ठीक है सर। अच्छा था सर। ओके सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। ठीक है रिकॉर्डिंग आप कर दो फिर अटेंडेंस ले लेता हूँ मैं।